This is Cricket Live Retention Special. हमें सारे न्यूज़ अब आ चुके हैं from all the franchises. So if you're joining us, we're going to recap that, look at all the squads. और जो बड़ी खबरें थी पिछले कुछ दिनों में, जहाँ हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस, इन सब की बातें हो रही थी. चलिए confirmation तो आ गया है. That has not happened, but we'll still try and read between the lines with Tom Moody, former Punjab Kings coach, former Sunrisers Hyderabad title-winning coach, as well as Irfan Pathan, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है. Irfan, welcome. Tom, welcome. Are we all set? Let's start with the Gujarat Titans, because today was about whether something we've never seen before happens. इतिहास में शायद IPL के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी, जिनकी जो प्रोफाइल है, जो दिग्गज खिलाड़ी है, IPL टाइटल-विनिंग कैप्टन है गुजरात टाइटंस के साथ, would he be going back to Mumbai Indians? That's not happened. ये है गुजरात टाइटंस की final squad as of retention day. Hardik Pandya will continue to lead them, and as we look at the release players, Yash Dayal, Shivam, Mavi, Pradeep Sangwan, जिन्होंने भूमिका निभाई थी over the last couple of seasons when they've won the title in 2022 and then fell short in 23. Alzari Joseph, Dasun Shanaka, Oden Smith released, but no other surprises. Irfan, शुरुआत आपसे करते हैं. बड़ी स्टोरी तो हार्दिक पांड्या की तरफ से है, and it looks like he will continue to captain the Gujarat Titans. Your thoughts? हाँ, अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि अगर वो ट्रेड प्लेयर टू प्लेयर होता है तो फिर एक और मौका बन सकता है, क्योंकि देखिए धुआं तो उड़ रहा था, आग कहीं पे लगी हुई थी. अब किसी ने पानी डाला जरूर है इस पे. सो अब किसने पानी डाला, क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन ये गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छी खबर है. और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ आशीष नेहरा के लिए, रौनक, क्योंकि मुझे लगा आशीष नेहरा जिस तरह से मेहनत की थी, जिस तरह से वो टीम बनाने में पूरी कोशिश की थी, हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस जब नीचे था तब उसको ऊपर लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था. उनके साथ ये कंटिन्यू करेंगे उस खेमे के साथ, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया खबर है अभी तक गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए. Alright, Tom, just to carry on that same point, Irfan just mentioning that clearly there had to be some smoke over here. There's no smoke without fire. Whatever it may be, though, it's a win perhaps for the Titans management if they have managed to retain the services of Hardik Pandya. Whatever may have gone down, and for whatever reasons, we'll perhaps find out more. There's still the possibility of a trade, but this is huge for the Titans that Hardik Pandya will continue to be with them if that indeed holds true. Oh, it's a massive win for the Titans. You know, Hardik Pandya is a rare breed when it comes to an all-round cricketer that can impact the game with bat or ball, and he's shown over the last couple of years he's clearly a natural leader as well. So he's an important and integral part of their success in the first 2 years of their campaign in the IPL since it became a 10-team tournament. So a win for the management, for GT. It certainly makes a significant difference to the balance of their side. So, whether we see a player trade, before the start of the season, I can't see that happening. It's nearly too difficult with that price tag to be able to match a player trade. But, at this stage, I think it's nice to see that they've retained their captain, even though that was a bit of an arm wrestle at the end. Yeah, well, something tells me we've not heard the last on that story. तो पिक्चर शायद अब भी बाकी है, देखते हैं क्या होता है. But in other observations on that Gujarat squad, आपने देखा अलजारी जोसेफ को भी रिलीज किया गया है. It'll be interesting to see how Gujarat Titans look to replace him. But for now, Hardik Pandya staying at the Titans. That's a gain for Gujarat, and it may be a loss for the Mumbai Indians, जिन्होंने शायद अपनी रणनीति हार्दिक पांड्या के इर्द-गिर्द बनाई होगी. As of now, Rohit Sharma will continue to captain this side. We'll have to keep an eye out कि रोहित शर्मा अपने भविष्य के बारे में क्या ऐलान करेंगे आने वाले दिनों में. लेकिन he is for now going to lead that Mumbai Indians team. And amongst the release players list, Jofra Archer, who they invested in. उन्होंने एक तरह से दाव लगाया था कि शायद जोफ्रा आर्चर पूरी तरह से फिट हो पाएंगे और बुमराह और आर्चर की जोड़ी हम एक साथ IPL में देखेंगे. That didn't happen, and Archer has been released, as well as Tristan Stubbs, Dwan Jansen, Jai Richardson. A lot of those overseas players were replacement players. लेकिन इरफान रिलीज प्लेयर्स पे अगर हम नजर डालें फॉर द मुंबई इंडियंस, काफी सारे ओवरसीज प्लेयर्स हेडलाइंड विद जोफ्रा आर्चर. इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए 7 फास्ट बॉलर्स को रिलीज किया गया है. आप अगर उसमें नजर डालेंगे, जोफ्रा आर्चर जरूर वहाँ पे बहुत बड़ी कहानी है. उनके साथ सब्र रखा गया 2 साल तक. फिर मुंबई इंडियंस ने कहा कि यार हमारा सब्र ना अब खत्म हो रहा है. और ये देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक आपको सब्र दिखाने वाले आपको ओनर्स मिलेंगे नहीं. सबसे ज़्यादा सब्र दिखाने वाली 2 टीम है, मुंबई इंडियंस और CSK. उन्होंने अगर नहीं दिखाया मतलब वो आप मूव ऑन करना चाहते हैं. यहाँ पे फास्ट बॉलिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी. और देखिए रोहित शर्मा की आपने बात की, ये जायंट है, ये बहुत बड़े खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के लिए. जिस तरह से जो कद महेंद्र सिंह धोनी का CSK के लिए है,
उसी तरह से सेम कद रोहित शर्मा का है मुंबई इंडियंस के लिए, तो वहां पे आप जब तक रोहित शर्मा खेलना चाहते हैं आपको वो वहां पे नजर आएंगे जरूर। और जिस तरह से जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अगर वही फॉर्म बरकरार रखा टी20 क्रिकेट में, तो आप जो अभी तक वो सीजन नहीं रहा है रोहित शर्मा का आईपीएल में, जिस तरह से आग लगाने की आप उम्मीद करते हैं, हो सकता है ये सीजन वो आग लगा दें, तो आपको वो कप्तानी में नजर आएंगे। बल्लेबाजी एकदम मजबूत नजर आ रही है, वेरी वेल सेटल्ड यूनिट एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, बिकॉज द सेकंड नेम यू सी डेवाल ब्रेविस, he doesn't get to play in a regular 11. That's the kind of batting side they have. The only thing they need now is maybe one more spinner who can help Piyush Chawla together, because they don't have Ritik Shaukin. But releasing 7 fast bowlers, that means you will go in the shopping market, in the auction, heavy on fast bowling. Yeah, and we might just see some exciting options there if Mitchell Stark's supposed return to the IPL takes place. Tom Moody, I wonder if you were advising this Mumbai camp with everything about Hardik Pandey that's happened now, it almost seems like a bit of a distraction. That still looks like a pretty good squad. You add a spinner like Irfan says, and maybe look for one real solid overseas fast bowler, and that still is as good as a title-winning team. They came close with the playoffs last season. Do you sense that's what they need to focus on now? Just getting that fast bowler, or can we still entertain the thought of Hardik Pandey and maybe someone like Cameron Green being a player swap to the Titans, if indeed that's still on the cards? Well, that's the only way it could possibly happen, purely because of the level that Hardik Pandey is at with regards to his salary at GT. So that's the only possible way. I agree with Irfan. I think that Mumbai need to focus on their fast bowling and a key spinner. Chawla had an unbelievable season, unexpected. We all were over the moon for his success, but it was unexpected success. So, whether he can repeat that again in 24, that's yet to be seen. So definitely need a spinner, someone like Hasaranga. Given that he's been released at RCB, maybe something that could be of interest for Mumbai, but they definitely do need some genuine pace. Hazelwood's another one that could be. Starks another one that could be considered. Kutsia, the young fast bowler from South Africa, another one that could be considered. But one of the main issues at Wankhede Stadium is very similar to the issue that RCB have, is having the bowling unit that can defend at that ground. They've got the batting, now they need the ability to be able to defend 120 balls. Alright, we'll hear more from the Mumbai Indians. और आगे जाके जिस तरह मैंने कहा कि रोहित शर्मा के भविष्य के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही है, only he will be able to confirm how much he still has to offer the Mumbai Indians. He's certainly good enough, as we saw in the World Cup. चले दूसरी तरफ, a team which rarely ever has questions that need to be asked of them, Chennai Super Kings. How nice is it, Tom Moody, to be in the Chennai Super Kings dressing room? You've released Ben Stokes because he announced he's going to undergo surgery. He's a big money player, and yet you barely needed him on your way to yet another title win last year. Ambati Rayudu has retired. They still have 32 crore and most of the squad that contributed to that title win last year intact. So what do they need? This is a nice place to be, isn't it? Well, they've got the most important person on that list, and he's the first one at the top left-hand corner, MS Dhoni. He's still playing, which is a big, big plus for Chennai Super Kings. He's the main reason he gets all those pieces together, and he gets players playing above themselves and finding confidence and skills that they never thought they had. Obviously Ben Stokes withdrawing is a bonus for them because it really does free up some serious cash going into the auction. So if there's any particular area that they need filling, they certainly have the muscle to be able to do that at the auction table. So with the release of as many overseas fast bowlers, you'd think that the likes of the Starks, the Hazelwoods, the Cummins, Kutsias, these types of guys will be definitely on their radar. And an all-rounder to replace Ben Stokes and Pretorius, because as we know, Chennai Super Kings do like to have the flexibility of all those all-rounders. Yep. And as Irfan, आपने जिस तरह कहा कि जिस तरह रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस के लिए, there's MS धोनी for CSK, एक तरह से जिस टाइप के झटके लग रहे हैं आज रिटेंशन डे के पहले, it's nice to see कि there's no surprise कि अचानक से धोनी is decided no, I may not play again after what happened last year. धोनी very much will lead this team, लेकिन एक शायद replacement player ढूंढना पड़ेगा for someone like Ambati Rayudu जो retire हो चुके हैं. How do you see CSK going at the auction? रौनक, मुझे लगता है कि उन्हीं का रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे. बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे
है, क्योंकि देखिए ऑलराउंडर की अगर बात करें ना तो उनके पास ऑलराउंडर बैठा हुआ है रविंद्र जडेजा के रूप में। शिवम दुबे अगर गेंदबाजी करते तो आपको एक और ऑलराउंडर मिल जाता है, लेकिन जो नहीं मिलता आपको ऑक्शन में जब आप जाते हैं ना, तो अच्छा इंडियन बैटर जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग करे और फिनिशर का रोल भी अदा करे, जो रायडू कर रहे थे उनके लिए, आ रहे थे बेबाक अंदाज में खेल रहे थे। फाइनल में भी वो एक छोटी सी पारी, लेकिन क्या इंपैक्टफुल पारी थी, तो वो रिप्लेसमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होगा। उसी के पीछे जाएंगे, क्या मनीष पांडे के पीछे जा सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो महेंद्र सिंह धोनी और खास करके जो मुंबई इंडियंस की टीम है ना, ये ड्यूटी में करती है। एकदम से ना हैट निकालती है, हैट के अंदर से खरगोश निकालती है और आपको लगता है ये नया खरगोश आ गया है, और उसी के साथ कमाल का काम करती है। एक और चीज, बेंगलुरु और चेन्नई में ना ड्राइव में ज्यादा अंतर है नहीं है, कुछ घंटे की वो ड्राइव रहती है, छोटा रास्ता है, तो हो सकता है कि वो ड्राइव से ना हर्षल पटेल भी आपको यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो रोल अदा कर सकते हैं हर्षल पटेल इस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जो ब्रावो अदा करते थे। उसी तरीके से उनका स्लो वन है, क्योंकि उस खेमे पे अगर आप नजर डालेंगे वहां पे आपके पास पतिराना है, वहां पे तुषार देशपांडे ने पिछले साल विकेटें जरूर ली थी लेकिन रन गए थे। ये चोटिल रहते बहुत सारे गेंदबाज इस टीम में आप नजर डालेंगे तो दीपक चहर भी चोटिल रहते हैं कई बार। तो अगर एक और फास्ट बॉलर आता है तो बिल्कुल भी मैं सरप्राइज होऊंगा नहीं। अगर वो हर्षल पटेल होंगे तो मैं बिल्कुल भी मैं एक्चुअली खुश होऊंगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि फिर ये टीम ना एकदम जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि चेन्नई में स्लोअर वन काम आ सकते हैं हर्षल पटेल के। बिल्कुल, मैं ये भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि लिसनिंग टू इरफान, आई थिंक टॉम मूडी इज आल्सो पिकिंग अप ऑलमोस्ट 80-90% of this when he mentioned the short drive from Bangalore to Chennai and how perhaps we could have Harshal Patel in yellow. Well, that is certainly an option. MS Dhoni works magic, but if he has to look for a replacement for Ambati Rayudu, why don't we look at the Punjab team and see if Punjab ने उन्हें एक विकल्प दिया है शायद, क्योंकि शाहरुख खान खेलते हैं तमिलनाडु के लिए। शाहरुख खान बड़े रेपुटेशन के साथ 9 करोड़ के लिए खरीदे गए थे पंजाब के लिए 2 सीजन्स पहले, लेकिन उस तरह का प्रभाव नहीं रहा फॉर द किंग्स। बट व्हाट वी आर सीइंग डिफरेंट फ्रॉम देम इज दैट इट्स नॉट अ ह्यूज होलसेल रिलीज लिस्ट, एंड दैट्स समथिंग इरफान जो हम कभी कभी अनुमान लगाते हैं कि पंजाब 1-2 प्लेयर्स 4-5 प्लेयर्स लेते और फिर सारे को एक सीजन के बाद रिजेक्ट कर देते या रिलीज कर देते। योर रिएक्शन टू सीइंग देयर रिलीज लिस्ट नाउ? This is fantastic and good pleasant surprise from Punjab Kings, because I've been part of the that team, and sometimes because when you don't get the result, आप क्या करते हो, आप थोड़े से ना ज्यादा बदलने की कोशिश करते हो। ये हमेशा से वो चलन रहा है, लेकिन अब ये स्टेबिलिटी देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। रिजल्ट मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन जो लड़कों पे आपने दाम लगाया, चाहे वो जॉनी बेस्ट हो, चाहे वो लियाम लिविंगस्टन हो, सैम करन के बारे में अटकलें चल रही थी कि ये बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, इनको आप रिलीज कर सकते थे, लेकिन उन्हें रिलीज नहीं किया। आपने शाहरुख खान को रिलीज किया, भानुका राजपक्षे को आपने रिलीज किया, क्योंकि आपको लगा कि मेरे पास जो 4 या 5 ओवरसीज खिलाड़ी है उनमें जगह नहीं बनेगी। उसमें सिकंदर रजा आते हैं, उनमें लिविंगस्टन आते हैं, उनमें जॉनी बेस्टो आते हैं, तो सैम करन जैसे खिलाड़ी आते हैं, तो इन 4-5 खिलाड़ियों में ये थोड़े पीछे रह जाएंगे। तो आपने बढ़िया तरीके से उन्हें रिलीज किया। शाहरुख खान को रिलीज करने में भी मुझे लगता है कि उनकी सोच ये है कि जितेश जिस तरह से बल्लेबाजी का स्तर उन्होंने ऊपर किया है, थोड़ा ग्रेजुएट भी हुए, अब इंटरनेशनल टीम में भी आए, तो इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो वो जो रोल उम्मीद कर रहे थे शाहरुख खेलेंगे, अब जितेश वो जिम्मेदारी लेंगे, तो आई थिंक उन्हें वो खिलाड़ी मिल गया है। ऑल एंड ऑल जो मुझे लगा ये ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आ रही है। सिर्फ शिखर धवन पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कप्तानी की, कि मुश्किल समय में वो अच्छी कप्तानी करे, तो ये एक अच्छी टीम है। Yeah, absolutely. And the points Irfan making, Tom, that they can actually put faith in a lot of their Indian players, because a lot of their big ticket players are the overseas, whether it's Livingston, whether it's Sam Curran. Now there was some chit chat on whether at 18.5 crore, a record for the IPL auction, Sam Curran could have been released and potentially bought back for a lower value. But what are your reactions on seeing Punjab keeping faith with all their high profile overseas names? Well, I think it's a good sign, purely because I thought they had a very good auction last year, and they had an extremely good squad that I felt that should have, certainly been in the top 4. So what they're doing, which is something they haven't done historically, is backing players. Yes, Sam Curran was paid a huge amount of money, but really they see him, I believe, as a franchise player, as in a long-term franchise player. Forget about how much you paid for the player. Concentrate on exactly what role you expect him to play and the value he brings to the team. With the 3 facets of the game, he's obviously a dynamic bowler, batter, and fielder, and he also captained the side in a few games when Shikhar Dhawan was injured. So,
I like the look of what they've done. Matt Short obviously came in as a replacement for Bairstow, so they've left him on the sidelines. So they go into the auction with the ability, because they've got the money in their salary cap, to be able to secure any player they wish, just to I suppose top up what is already looking like a very good squad. Yep, that's very different for all challengers Bangalore as we move to one of the most followed teams of the IPL. और एक तरफ से अगर हम देखें कि जो बड़े प्लेयर्स जिनके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है शो पे, इरफान पठान मेंशन हर्षल पटेल, Tom Moody earlier mentioned Wanindu Hasaranga for the Mumbai Indians as a backup spinner. Both picked up at nearly 11 crore at the last auction and now both released. And as you add Josh Hazelwood, that's nearly 30 crore freed up with just 3 players plus a huge amount of overseas players. They only have the 3 or rather 4 that they've retained: Faf, Maxwell, Will Jackson, Topley. And Tom, you were mentioning this screams that they're going to go for one player at that auction. Yeah, I think Mitchell Stark is certainly in their sights. Mitchell Stark has played for RCB before. They've got the dilemma of not being able to defend at their own venue. So their record at home is very poor, so they need to rectify their record at home if they're going to be serious title contenders. They've been close over the years, but they haven't managed to get over the line and get a trophy, which is, when you look at sort of the quality of the personnel that they've had in their teams over the years, is a real surprise that they're not a title-winning franchise, but that's what they need to do. A little bit surprised with regards to releasing of Hasaranga and Hazelwood, because both of them are high-quality bowlers. But I'm thinking more so with Hasaranga that they may feel they might be able to buy him back out of the auction at a cheaper price, which gives them the flexibility. दिस इज़ अ गैम्बल इरफान. कभी कभी ये बैकफायर हो जाते हैं अगर आप अपने एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर को ऑक्शन में डाल देते हो एंड यू होप कि यू विल गेट हिम बैक चीपर. क्या आप सरप्राइज थे कि इन दैट लिस्ट देयर इज हासरंगा एंड हेजलवुड and Harshal, जहाँ चिन्नस्वामी में you want experienced bowlers? How do you make RCB releasing all 3 players? देखिए, हेजलवुड जैसा गेंदबाज अगर वो जा रहा है, रिलीज हो रहा है, इसका मतलब शायद अवेलेबिलिटी है, वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है. बाकी कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा. हेजलवुड बहुत अच्छे गेंदबाज है, जरूर उनके पास वेरिएशन उतने हैं नहीं, लेकिन वो नई गेंद से ना आपको 3 ओवर निकाल के देते, तो वो एक सरप्राइज था. वनिंदु हसरंगा बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे लिए, क्योंकि वो जो स्किल सेट लेके आते हैं, एक तो आपको वो अलग तरीके से गेंदबाजी करते हैं. और आप उनको क्यों लेके आए थे? आप चहल को छोड़ के उनको लेके आए थे. इसका मतलब आप चाहते थे कि ये हमारा लॉन्ग टर्म स्पिनर है, जो बैटिंग भी कर सकता है, जो एक लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी रह सकता है. अब आपने उसको 2 साल में छोड़ दिया, जहां पे 1 साल तो वो एक टॉप के पायदान पे था. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग मूव था. हर्षल पटेल का मैं समझ सकता हूं कि वो इतने बड़े पर्स पे ना, लगभग 10 करोड़ के आसपास, वहां पे आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे. एक पेस की कमी थी, वो स्लोअर में इतना काम नहीं आ रहा था. जब परफॉर्म किया था तो वो दुबई के मैदानों में किया था, तो ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है. और जब इंडिया में भी परफॉर्म किया था तो वो चेन्नई के पिचेस पे वो जब अलग शफल हुआ था आईपीएल का वक्त, जो होम ग्राउंड नहीं था वहां पे आरसीबी का, तो वो परफॉर्म हुआ था. तो वहां पे मैं समझ सकता हूं, लेकिन हसरंगा का ना होना ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर. अगर आप ये सोच रहे कि आप उनको सस्ते में ले लेंगे तो ये गलतफहमी है. All right, that might bite them back, but maybe Tom, Irfan, शायद maybe RCB are thinking that Maxwell is now the lead spinner. Certainly you can entertain that thought after what happened in the World Cup, right? You don't need to respond to that. Let's go to our next franchise, shall we? और जहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात करें, सवाल हमेशा यही उठता है रिटेंशन डे के पहले कि क्या आंड्रे रसल को एक और साल, एक और मौका दिया जाएगा. He again had a mixed bag last year, लेकिन जो रेपुटेशन के साथ उतरते हैं आंड्रे रसल, you want him to win you at least 2 or 3 games in a season. उनकी फिटनेस पे सवाल होते हैं. He's going to be retained. As far as the release list goes, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्गुसन traded players थे पिछले साल के पहले, लेकिन बड़ी रकम के लिए उतना प्रभाव नहीं हुआ. श्रेयस अय्यर will be back, remember, as captain. That's a big one for them. They missed their captain last season. But इरफान, उस टीम पे अगर हम नजर डालें, शार्दुल, लॉकी, क्या आप आदि स्मार्ट रिलीज प्लेयर्स, विल दे गो बैक फॉर देम, और क्या क्या एरियाज में अब भी उनको इंप्रूव करना होगा केकेआर? देखिए, सबसे बड़ी बात है श्रेयस अय्यर की, जो आपने बात की ना, क्योंकि उनके आने से ना ये टीम एक मजबूत टीम नजर आएगी, क्योंकि उनका जो स्तर इंटरनेशनल क्रिकेट में ऊपर आया है. यहाँ पे आपको सिर्फ ये खेलेंगे नहीं, सिर्फ ये कप्तानी नहीं करेंगे, ये मैचेस जिताएंगे केकेआर के लिए. उस तरीके का खिलाड़ी रहा है. आप नीतीश राणा को देख रहे थे, वो एक लीडरशिप का हिस्सा थे पिछले साल. उनका भी परफॉर्मेंस हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स बहुत बढ़िया रहा है. रिंकू सिंह
आप जिस तरह से खेल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय टीम में, इंडियन टीम में जगह मिला है, तो आपको एक पुख्ता बल्लेबाज टीम नजर आ रही है। जो लड़के वहां पे रिटेन किए, जेसन रॉय आधे में से आए थे, अब उनको रिटेन किया गया है। सुनील नारायण वहां पे आपको नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि जो कोलकाता की पिच हमने देखी थी, क्या गौतम गंभीर, सुनील नारायण, वो 2013, 14, 12 वो वाली तरीके के पिच, क्योंकि हमने देखा था कि स्लो पिच भी वहाँ पे बन सकती है। अगर आप वहाँ पे नज़र डालें तो कई बार वैसी हो जाती है। तो उस लिहाज से ये जो कोर बना के रखा है, इनके इर्द गिर्द ये चलेगी। लेकिन जिन लड़कों को निकाला गया है, रिलीज़ किया गया है, उसमें शार्दुल ठाकुर है, लॉकी फर्ग्यूसन है, इसका मतलब वो जो तेज़ गेंदबाज है उसमें उमेश यादव का भी नाम आता है, शकीब की तरफ नहीं गए, टीम साउदी वहाँ पे। तो आपने जो मेन फास्ट बॉलर्स थे उनको निकाला गया है। जो फास्ट बॉलर है भी टीम में वो यंग है, और एक ऑलराउंडर आपके पास एंड्रे रसेल है। इसका मतलब आपने जो टीम चुनी है अभी तक वो बैटिंग के लिए है। अभी मतलब आपको गेंदबाजी को पुख्ता करना है, तो आपको लगभग 3-4 फास्ट बॉलर लेने की जरूरत पड़ेगी। अब किसके पीछे जाते हैं, हो सकता है कमेंट्स दोबारा वहां पे आपको वो मिलाप केकेआर का नजर आए, लेकिन फास्ट बॉलर उनको बहुत जरूरत पड़ेगी। राइट, विल सी हाउ थिंग्स गो। एक शायद एंड्रे रसेल के लिए एक बैकअप भी आप रेगुलरली ढूंढते ही है, जो डेविड वीसर के रिलीज करने से दे हैव टू फाइंड दैट ऑलराउंड ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। केकेआर सीम वेरी हैप्पी एज वी हर्ड फ्रॉम वेंकी मैसूर कुछ देर पहले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कि ही थिंक्स दैट they've done well, they've got their first choice players. Now let's see Rajasthan Royals, and is this also a team, Tom, that's pretty pleased with their first choice or core group of players? They've retained a major chunk of him. Jason Holder's perhaps the headline grabber as far as the release players go. Joe Root mentioning he's not going to be available for the next IPL, and a number of uncapped Indian players in that list too. But Holder, thoughts on whether Rajasthan might go back for him, or are you surprised that they even released him? I'm not surprised that they released him, particularly with this impact player rule now. It's made it a lot harder for the all-rounders to, I suppose, to command the prices they have done historically in the IPL. I think Rajasthan did a lot of their heavy lifting before the release day today, and that was in the trade, getting Avesh Khan. You know, they have strengthened their pace bowling on a domestic level. He's a good get for them because he fills an important void with, you know, a wicket taker in the power play, someone that can bowl in the death. Didn't quite find his feet at Lucknow for whatever reasons. I think he was injured in the early parts of the season and he just didn't have any sort of rhythm to his bowling. But he's a very good acquisition for him prior to this release date. But Joe Root's a bit of a setback. I'm sure they would have loved to have had the international experience of him, particularly at the price they secured him at a base price. But Jason Holder, they might go back for him in the auction because they do need an all-rounder, overseas all-rounder, but they'll be hoping they can get it at a cheaper level. Yep, all right, the points made. Avesh Khan, big money trade from Lucknow to Rajasthan Royals, और दूसरी तरफ गए देवदत्त पडिक्कल. So that is something they'll have to keep an eye out for. But Avesh and Prasidh, that'll be exciting for Rajasthan Royals. As far as Lucknow go, इरफान शायद हमें सुनने में तो यही आया कि राजस्थान रिक्वेस्टेड कि भाई आप आवेश खान हमारी तरफ भेजे, हम आपको पडिक्कल दे देंगे. Padikkal is now one of the players that they have. Lucknow Super Giants, they've released, I guess, no real big surprises or standouts. Unatkar, Daniel Sams, उनके core group of players अब भी वहीं पे शामिल है, मौजूद है. This is still a strong team. या मजबूत टीम है. ये बेसिस कवर है. ज़्यादातर आप देखेंगे फास्ट बॉलिंग में आपको वो नजर आएंगे मार्क वुड, मोहसिन खान अगर फिट रहते तो ये एक और मजबूत टीम नजर आती है. युधिवीर पिछले साल खेले थे, नवीनुल हक वहाँ पे आपको नजर आएंगे. तो ये फास्ट बॉलिंग एकदम सॉर्टेड है. यश ठाकुर ने बहुत बढ़िया काम किया था पिछले साल बतौर यंग तेज गेंदबाज. और अगर आप नजर डालेंगे आपके पास ऑलराउंडर भी है वहाँ पे. देवदत्त पडिक्कल और आवेश खान का ये जो ट्रेड रहा है ना, ये बहुत स्मार्ट ट्रेड रहा है मुझे लगता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को आवेश खान के आने से बहुत बढ़िया फायदा हो गया. लेकिन राजस्थान रॉयल्स देवदत्त पडिक्कल का इस्तेमाल सही से कर नहीं रही थी, वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो ओपनिंग करते या नंबर 3 मैक्सिमम उनका नीचे है. यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम है ना, पिछले साल दीपक हुडा को आप नंबर 3 पे देख रहे थे ज्यादातर, दूसरे खिलाड़ी को भी लगाया. तो यहाँ पे सीधा सीधा केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक अगर ओपन करते तो आपको 3 नंबर पे देवदत्त पडिक्कल मिल जाएंगे. और वहां पे जो पिच अब लखनऊ में बदली है, क्योंकि मिट्टी बदली है, उछाल देखने को मिला है,
तो वो उछाल को भी रिलिश कर सकते हैं देवदत्त पडिक्कल। ऑल इन ऑल सेटल यूनिट नजर आ रही है। इसमें बस खाली आपको वो थोड़े पुर्जे ठीक करने की जरूरत है, वो किया तो ये एक और साल अच्छा क्रिकेट खेलेगी। राइट, सो लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके पास नया कोच भी है। जस्टिन लैंगर, द फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कोच, इज गोइंग टू टेक चार्ज देयर। गौतम गंभीर जो उनके मेंटर थे अब वापस केकेआर की तरफ जा चुके हैं। सो इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही गोज। एंड फाइनली लेट्स हैव अ लुक एट द सनराइजर्स हैदराबाद, टॉम मूडी's former team, which has undergone a lot of change over the last few years. Dan Vittori is going to take charge as head coach over there after Brian Lara just managed that for one season. Harry Brook released 13 crore plus, in addition to some uncapped Indian players as well as Aqil Hussain and Adil Rashid. That's still a decent remaining purse that they have of 34 crore. But the Brook question, the big question, could you have given him one more year? Could you have invested in the future for Harry Brook? How do you read their release? Well, to me, Harry Brook is one of those players that I'm sure was selected with the view that he's going to be a long-term player at Hyderabad, and I'm surprised that I see him being released after 1 year when he was batted. He batted most of the season out of position, and found himself out of the side eventually at the end of the season. Yeah, look, you can look at it either way. You can sort of look at it in the fact that, they should stick with him and carry the sort of, or be part of the ride of a generational type player, because we all know that Harry Brook is a special talent. Or do you take the view that maybe we can pick him back up out of the auction at half the price that we paid for him, given he had such a poor first season and other teams may not be looking at him as closely as what you'd think. At the end of the day, it's hard to really read exactly what Sunrisers are doing, because they were very erratic with their approach and their strategy around selection. I thought after the auction last year that they had a good auction, a bit like Punjab. I thought they built a really good squad, but it was just through the inconsistency of selection and strategy was puzzling at times. The most puzzling release from Sunrisers till date will remain Tom Moody from a couple of years ago. But thank you for that, Tom. At least we got to retain you as a result. So I leave that there. Let's move forward. I thought you were talking about Rashid Khan. Oh, no. No, I'm not. Okay, anyway, let's not dig up old wounds, shall we? Let's go to Delhi Capitals और दिल्ली टीम की तरफ अगर बढ़े तो इरफान, सबसे बड़े सवाल यही उठेंगे कि क्या ऋषभ पंत वापसी कर पाएंगे एज कैप्टन। आंद्रिक नौकी की फिटनेस पे भी उन्होंने एक दाव लगाया है कि शायद अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज दे रिलीज द लाइक्स ऑफ राइली रूसो, रोवमन पाउल, फिल सॉल, मुस्तफिजुर रहमान, मनीष पांडे, साकरिया, सरफराज खान। इन सारे खिलाड़ियों को हमने कई बार प्लेइंग 11s में देखा है। दे फॉर्म्ड अ की पार्ट ऑफ द स्क्वाड बट दे डिडंट क्वाइट गेट द सक्सेस। लंबी लिस्ट तो है रिलीज प्लेयर्स की, आपने क्या अंदाजा लगाया इससे? देखिए, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को क्या जरूरत है? पिछले साल भी हमने स्ट्रगल करते हुए देखा, और ये एक ऐसी टीम, ऐसे कोच के पास है जो पिछले कई सालों से इस टीम के साथ है, वो रिजल्ट नहीं मिला, और बिना रिजल्ट के उन्हें वो लगातार बैकिंग की जा रही है। आई थिंक ये बहुत सरप्राइजिंग है, लेकिन क्या जरूरत है? मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों की इनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फास्ट बॉलिंग एकदम सॉर्टेड नज़र आ रही है, चाहे वो खलील अहमद हो, लंगी अंगीडी हो, और नौकिया अगर फिट होते, और उसके बाद ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, एक बहुत बढ़िया इनके पास तेज़ गेंदबाज हैं, तो तेज़ गेंदबाजी सेटल नज़र आ रही है। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के रूप में आपको स्पिनर बहुत बढ़िया नज़र आते हैं, तो यहाँ पे आपको चाहिए तो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, दिल्ली कैपिटल्स चाहती थी भी कि पृथ्वी शॉ को ना कहीं और दिया जाए और कहीं और से मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को लिया जाए जो इंडियन हो, लेकिन वो उन्हें मिला नहीं है। तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ की भी जिम्मेदारी बन जाएगी कि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है उससे और बेहतर करने की उम्मीद है, क्योंकि ये माना जाता था बहुत साल पहले कि दिल्ली कैपिटल्स को देखा जाए ना तो ऐसी टीम थी, जब श्रेयस अय्यर भी उस टीम में थे, लगता था कि नेक्स्ट मुंबई इंडियन बन सकती है ये, क्योंकि ज्यादा बढ़िया इंडियन कोर नजर आता है, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा। खास करके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इस टीम में मिसिंग नजर आते हैं। ऑलराइट, इरफान पठान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टॉम मूडी, बिग थैंक यू टू यू एज वेल एज वी रैन थ्रू ईच ऑफ दोज स्क्वाड्स एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज विल गो ऑन विद द IPL on Star, so make sure you stay tuned to the Star Sports Network. Until next time, this is all that we had on our very special Cricket Live Retention Special.